Hello students, I am Rekha Yadav, your science teacher. Today we will start lesson 4 of science, sorting materials into groups. Chapter 4, Sorting Materials into Groups. Objects around us. You see a large number of things around you. हम अपने चारों साइड काफ़ी संख्या के अंदर जो चीज़ों को देखते हैं, लाइक्स. Some of the common things that you see in your classroom are desks, chairs, teacher's table, blackboard, doors, fans, water bottles and pencil box. You see things like toys, mobiles, gloves, clothes, shoes, and many other objects in your home. All these things are of different shapes, sizes, and colors. They are made from different materials. ये सभी चीज़ें हैं जो अपनी शेप, साइज में अलग अलग होती है, तो इनको बनाने में अलग अलग मटेरियल का यूज होता है. And have different uses. In order to understand the things around us, it is necessary to classify them into groups. इसलिए हमारे चारों साइड की जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम उनकी रीडिंग के लिए समझने के लिए हमको उनको ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफिकेशंस करना होता है. Material, a substance or a thing which is used in the making of different objects is called material. तो ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पॉइंट आता है मटेरियल्स. मटेरियल्स वह चीज़ होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बनाने के अंदर यूज आती है. All the objects are made of one or more kinds of material. कोई भी ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ होता है. For example, a chair is made of wood, so wood is a material. A spoon is made of steel, so steel is a material. एग्जाम्पल पे एक चेयर वुड की बनी हुई होती है तो वुड जो है चेयर का मटेरियल है. ऐसे स्पून स्टील की बनी हुई होती है, स्टील जो है स्पून का मटेरियल है. Some more examples of materials are cotton, silk, coal, iron, plastic, and glass. Materials are generally of two types: natural materials and man-made materials. मटेरियल्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल मटेरियल्स एंड मैन मेड मटेरियल्स. For example, wood is obtained from nature, so wood is a natural material. एग्जाम्पल वुड है जो है हमें नेचुरल से प्राप्त होता है, प्लांट से मिलता है जो कि नेचुरल चीज़ है, तो वुड जो है एक नेचुरल मटेरियल है. Plastic is made in factories, so it is a man-made material. प्लास्टिक जो है फैक्ट्री में बनता है, इसलिए प्लास्टिक जो है मैन मेड मटेरियल्स है. An object made of different materials. The same object may be made of different materials. For example, a plate is an object that is used in our daily life. A plate may be made of different materials like plastic, glass, stainless steel, brass, and silver. कोई भी ऑब्जेक्ट्स विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बना हुआ होता है. एग्जाम्पल पे हमें यहाँ एक प्लेट जो एक ऑब्जेक्ट है, तो प्लेट जो है हम प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, स्टील से भी बनती है, पेपर से भी बनती है. Different types of objects made of same material. Plastic is a material. It can be used to make different kinds of objects. For example, it can be used to make objects like toys, utensils, bags, mugs, tumblers, buckets, and सेम ऐसे ही किसी एक मटेरियल से हम विभिन्न प्रकार की जो है अलग अलग तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. जैसे कि प्लास्टिक एक मटेरियल है, तो प्लास्टिक से हम डिफरेंट टाइप्स की जो है ऑब्जेक्ट्स मेड कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं. brushes. Properties of materials. We use metals like steel or aluminium to make utensils for cooking purposes, but
we will never use paper for making such utensils. नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि हम भोजन बनाते हैं स्टील के बर्तन में बनाते हैं, न कि किसी कागज़ के बर्तन में। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न होता है? Because paper utensils will catch fire when placed on the burner or gas stove. क्योंकि अगर हम कागज़ के बर्तन में अगर फूड प्रिपेयर करेंगे तो वो आँच से जल जाएगा। Hence, we choose a material to make an object depending on its properties and इसलिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स है वो जो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से बनाया जाए, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। the purpose for which the object is to be used. In this context, let us read about some important properties of materials. Appearance. Materials usually look different. तो यहाँ पर हम मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले हमारी अपीयरेंस। Different from each other. Sand looks very different from wood. Wood appears quite different from plastic. Plastic looks different from aluminium. Aluminium looks different from cotton. At the same time, there are some similarities between sand, wood, plastic, and cotton that are not there in aluminium. The property of a material with a shining surface is called luster, chamak. Materials like iron, copper, and aluminium, which have luster, shining surface, are called lustrous materials. Materials like paper, wood, plastic, and cotton, which do not have luster, are called non-lustrous materials. Hardness. When we press a piece of cotton with our fingers, it gets pressed easily. Materials that can be compressed easily are called soft materials. नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस। हार्डनेस में मतलब जिन मटेरियल्स को हम अपने कंपोस्ट यानी कि दबाया जा सकता है इजीली, वो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। Foam, melted wax, and sponge are some examples of soft materials. But if we try to compress or cut an iron nail, we cannot do so. Materials that cannot be compressed easily are called hard materials. Most metal. इसी तरह से जिन मटेरियल्स को हम दबा नहीं सकते हैं वो हार्ड मटेरियल्स होते हैं। Such as iron, copper, and aluminium are hard. Because of this quality of hardness, metals are used to make household utensils and factory equipment. Solubility. Take a glass or a beaker and fill it half. नेक्स्ट पॉइंट है solubility. With water. Add half a spoonful of sugar in it. Stir the contents with the spoon. Wait for a few minutes and observe it. You will find that the sugar has disappeared into water. This shows that sugar has dissolved in water or that sugar is soluble in water. इसके लिए समझने के लिए हम एक गिलास लेते हैं, उसमें कुछ पानी डालते हैं और कुछ शुगर जो है उसके अंदर डालकर उसमें मिला देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शुगर जो है वाटर के अंदर जो है घुल गई है। सो वाटर इज ए soluble material. If we taste this water, it is sweet. Why? Because the sugar is still there in the water, but its particles have become so small and spread uniformly in water that we cannot see them. Now, take another beaker and fill it half with water. Add half a spoonful of sand in it. Stir the contents with a spoon and observe it. We find that the settles down at the bottom of the beaker. The sand does not disappear in water. We can say that sand does not dissolve in water. Solubility. दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम एक ग्लास में वाटर लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ सैंड रेत को मिलाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो सैंड है वो नीचे ग्लास के अंदर बैठ गई है, ना कि वो पानी में घुल गई है। सो सैंड इज insoluble. Of solids in water. Substances that dissolve when mixed with water are said to be soluble in water.
whereas the substances that do not dissolve in or mix with water are insoluble in water. Transparency. Hold a glass tumbler in front of your eyes. See through it. You can see all the objects around you. This happens because glass is a transparent material. So, materials through which we can see the objects clearly are called transparent materials. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग होता है आर पार दिखाई देना। तो जिन मटेरियल्स के हम आर पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। And this property of the materials is called transparency. Some more examples of transparent materials are water, alcohol, air, and cellophane paper. Some kind of plastic bottles are also transparent. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent glass and transparent plastic containers so that buyers can easily see these items. Thus, materials through which we cannot see objects clearly are called opaque materials. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके कि हम आर पार दिखाई नहीं दे सकता, कुछ भी इनके आर पार नहीं देख सकते हैं, वो ओपेक मटेरियल्स होते हैं। And this property of the materials is called opaqueness. We keep our things in closed iron almirahs so that they cannot be seen. Cardboard, metals, wall, and wood are some examples of opaque objects. If we hold a butter paper in front of our eyes, we can see partially through it. So, butter paper is a translucent material. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, पार्टली देख सकते हैं, तो इनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहा जाता है। Those materials through which we can see the objects partially are called translucent materials, and this property of the material is called translucency. Grounded glass, frosted glass, tissue paper, dust-laden air, fog and mist are some translucent materials.